In the last video, we have already discussed about the switch case statement. So in that video, we had discussed about the syntax and some examples. In this video, we are going to cover the code, that how the code is to be written using the switch case statement. So in this video, we will take the simple example so that we can show you that how the switch case statement will work. In the last video, we have already told you that the switch case statement is only work for the true condition. There is no option for the false condition. So we will take a simple example here, x, and the value of x you can take from the keyboard. So write down some message that enter number and then scanf. Now x will work as a selector, so we will write the x inside the switch statement, and this x will be compared with all the different cases. So first we will write here the case, and the first option is suppose 1, because we have taken here the integer value. Okay, so if the value of x equals to 1, then whatever the message you want to show, you can write over here. Okay, तो इस प्रिंटफ में हम लोग मैसेज दिखाना चाहते हैं, सपोज हेलो फर्स्ट ऑप्शन. ओके, एंड नाउ ब्रेक. Likewise, we also have to use the second option. If the first case is not matched, then the value of x will be compared with the second. Okay, so if the value of x equals to 2, then we have to display that it is a second option, and again break. You can write here the third option and then enter this third option and again break. If not a single cases are matched, then we have to use the default option. ये जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट सेक्शन हमारा तब एग्जीक्यूट करेगा जब इसमें से कोई भी केस मैच नहीं करेगा. मीन्स x का वैल्यू ना तो 1 होगा, ना ही 2 होगा और ना ही 3 होगा. उस केस में हमारा डिफॉल्ट सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा. तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं दिस इज माय इनवैलिड ऑप्शन, राइट. एंड देन लेट्स सी दैट व्हाट विल बी द आउटपुट. Compile it first. There is no warning, no error. That's great. And now execute it. So answer is hello first option. Okay, so first of all we have to clear the screen so that the previous output will be removed and the fresh output will come on the screen. So here if I will enter 2, then it will display it is second option, because the value of x will be matched with the case 2. Now you can show the execution step by step. So we are using the F7 key for the step by step execution. तो आप यहाँ पे प्रेस कीजिए F7. तो अभी हमारे पास जो कंट्रोल है वो फर्स्ट लाइन मेन के पास है. फिर से आप F7 को प्रेस करिए, स्क्रीन क्लियर करेगा. उसके बाद फिर से हमारा एक
कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करेगा। सपोज इस पर हमने डाल दिया 3, तो x की वैल्यू केस 3 से मैच करवाएगा, क्योंकि केस x का वैल्यू जो हमारा है वो 1 से मैच नहीं करेगा, 2 से मैच नहीं करेगा, तो 3 के साथ मैच करेगा। तो देखिए अभी आपका कंट्रोल डायरेक्टली थर्ड केस के पास जाएगा। ओके, सो थर्ड केस में आ गया और मैसेज डिस्प्ले करेगा, इट इज़ थर्ड ऑप्शन। और उसके बाद ब्रेक है, तो बाहर आ गया ब्लॉक से, और ये जो ब्लॉक था हमारा स्विच केस का यहाँ पे क्लोज हो रहा था, और उसके जस्ट बाद में गेट सीएच था, इसलिए ये गेट सीएच के पास आया और देन ओवर। Okay, so if again you will check by giving the different values, suppose 2 you are giving this time, so it will match with the case 2 and it will display it is second option, and due to this break the control will automatically transfer to the outside of this switch case block. Then directly jump to the get ch, और गेट सीएच के बाद यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया। गेट सीएच के कारण रुका हुआ है हमारा, फिर से कोई की प्रेस कीजिए वापस प्रोग्राम में, फिर से F7 एग्जीक्यूशन होगा।